Okay, in today's Pandas class, we will try to understand labels in Pandas. Okay, labels. Before in the previous class, I told you that series. Okay, first of all, series are what? Series is just like a column. Already we have studied that data will be stored as a table. In the table, the data will be stored in the rows and columns format. So in Pandas, series is just like a column, okay, in a table. Okay, so series is what? It is a one dimensional array. Array means, already I told you that to store multiple values. So one variable can hold one value, either it may be integer, float, char, string, any one variable never store multiple values. एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता. तो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए अरेज क्रिएट करते हैं. इन द प्रीवियस क्लासेस पाइथन जावा में मैंने बताया, सी में भी अरे मीन्स मल्टीपल वैल्यूज़. ओके, स्टोर एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने का इसको अरे बोलते हैं. दैट इज सिंगल डायमेंशनल अरे. सी हियर ए इज़ ए लिस्ट. ओके, ए इज़ ए लिस्ट. सो इस लिस्ट के अंदर इसको सिंगल डायमेंशनल अरे भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर अरे नहीं होता. लिस्ट को ही हम लोग अरे जैसा इस्तेमाल करते हैं. ए इज इक्वल 172 इंटीजर्स ऑल, ये लिस्ट है. इसको अरे भी बोलते हैं. सिंगल डायमेंशनल अरे इसलिए बोलते हैं. सिंगल डायमेंशनल मतलब एक ही अरे है. मल्टी डायमेंशनल अरे मीन्स अरे के अंदर और एक अरे. A array having another array is called multi-dimensional array. Single dimensional array means only one array is there. Otherwise, in Python, list will be considered as array. So A is a variable that is assigned within list. List, I told you that 172 integer values are stored in a list. List always be represented in square brackets. Okay, so लेबल जानने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सीरीज. सीरीज इज जस्ट लाइक ए कॉलम इन ए टेबल. ओके, सो सीरीज इज वन डायमेंशनल अरे होल्डिंग डाटा ऑफ एनी टाइप. ओके, वन डायमेंशनल अरे होल्डिंग any data type. Here it is holding integers. So whenever I want to make a column from this series, A is equal to a series, so I need to call PD, means that is alias name of the pandas, PD dot series. Series of what? A variable. मैंने पिछले क्लास में बताया था. देन रिजल्ट क्या होगा? आपको इस टाइप का मिलेगा. क्या मिलेगा? ये 172 जो लिस्ट था वो 172 एक कॉलम बन गया. 012 क्या है? उनका सीरियल नंबर्स है. कोई लेबल नहीं दिया तो वो 012, it will take 012 as labels. So now we will try to understand labels. Labels is what? If nothing else is specified. अगर कोई चीज़ आपने स्पेसिफाई नहीं किया, so तब the values are labeled with their index number. So if any label, if you have not specified any label for the values, so that values are labeled with their index number. So लेबल आपने स्पेसिफाई नहीं किया वैल्यूज़ के लिए, तो वैल्यूज़ का इंडेक्स नंबर ही लेबल बन जाता है. तो फर्स्ट वैल्यू हैज़ इंडेक्स नंबर 0, सो फर्स्ट वैल्यूज लेबल इज़ व्हाट? 0. सेकंड वैल्यूज लेबल 1, because second value index 1, so etc. So this label can be used to access a specified value. So जब भी हमने whenever we want to access a specified value, we will use that labels to access specified value. Here labels will be, label को इस्तेमाल करके label को use करते हुए हम लोग एक specify value का कोई access कर सकते हैं. Example, so फर्स्ट वैल्यू रिटर्न हो जाएगा. सीरीज़ के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू सीरीज़ के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या है?
फिर इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू होता है, इसके अंदर 1 है, सेकंड वैल्यू 7 है, थर्ड वैल्यू 2, थर्ड वैल्यू का इंडेक्स है 2 है, सेकंड वैल्यू का इंडेक्स 1 है, फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स 1। अगर आपने इफ यू हैव नॉट गिवन एनी लेबल्स, सो दीज इंडेक्स नंबर्स विल बी considered as labels. By using that labels, index numbers, we can access that specific value. So here try to understand. So in this code, my var index 0. So at 0 index, whatever the value, now 0 index will be used here as a label. So now at 0 index means its label is 0. Whatever the value is there, that value will be printed. At 0 index, the value is what? 1. See, now 1. Okay, understood that. At 0 index, if you change this index to 2, means last index. That is what your last index. Just I have changed the index number. Index number means not, because you have not mentioned any labels for the values are what? This list values are 1, 7 to all are integer values. I told you that in Python list will be considered as array. So column is what? It is a single dimensional array. One dimensional array means an array means multi-dimensional array means a array having another array, means inside of array one more array is there. Single dimensional array means only one list, one array. Okay, so here second label, second index number, लास्ट इंडेक्स नंबर, दैट इज़ बिकॉज 0 इंडेक्स स्टार्टेड विथ 0, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, 0 इंडेक्स के बाद 1 है, 1 इंडेक्स के बाद वैल्यू 7 है, 2 इंडेक्स के बाद 2 इंडेक्स वैल्यू 2 है। सो जब हमने 2 इंडेक्स दिया है तो वैल्यू आएगा 2 आएगा इधर 2। ओके, अंडरस्टूड दैट। सो आप अगर आपने इधर लिखना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग रखना चाहते हो तो यू कैन कीप ए स्ट्रिंग वैल्यू। अंडरस्टूड दैट। तो वैल्यू के सामने उसका वैल्यू 2। व्हाट वैल्यू 2? वैल्यू 2 मीन्स सेकंड इंडेक्स वैल्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड इंडेक्स 0 1 2 सेकंड इंडेक्स। error in which line? Which line error is where? Line 7. Line 7 second index. Second index value 2. Why? Because at second index 0 1 2 इंडेक्स स्टार्टेड विथ इन लिस्ट इन एन अरे के अंदर लिस्ट के अंदर इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं। तो 0 1 2 सेकंड इंडेक्स के पास वैल्यू क्या है 2, क्योंकि यू हैव नॉट मेंशनड एनी labels for these values, so index values will be considered as labels. Okay, this is called labels. So next is what? How to create the labels. Let us see. With the index argument you can name your own labels. So index argument के साथ इस्तेमाल करके आप you can name your own labels. How can we create our own labels? Import pandas as PD. Pandas is what? Our library, Python library. As PD means alias name. Pandas का दूसरा नाम क्या? PD.
ताकि हम जब भी पांडास को कॉल पीडी के नाम से कॉल करेंगे. So A is a list, okay, variable assigned with a list. List values integer values 172. myvar is a variable, okay, is equal pd dot series. Means अभी series मैंने बताया था. I told you that series is nothing but it is a series is what single dimensional array. Here series means it is like a column. So अभी series कॉलम बना रहा हूँ 172 लिस्ट का सीरीज ये वेरिएबल है. तो जब भी अपने वेन एवर आई अप्लाई ये हियर, सो दिस लिस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए कॉलम. नेक्स्ट इंडेक्स. इंडेक्स इज व्हाट हियर x कामा y कामा z. x कामा y कामा z. तो x कामा y कामा z. नाउ लेबल्स created for what? Label created for what? See, let us see the code. Print. What happened? See, here what happened here? Index x y z. Before that, labels were created as 0 1 2 because index numbers used as labels. Now here index, for every index x, this label will be kept at 0 index. Next y label will be kept at 1 index. Z value kept at 2 index. Okay, so this is the way how to create your labels. So actually then print myvar is a variable. You keep your name Vasu variable, your name. So, okay, import pandas as pd. Pd, it is your wish. So pandas can be called with any name. It is called short name, nickname, okay, second name, alternative name. Pandas p, okay, you no issue. A is a list, you comment here, it is a list here. Otherwise it is also list, otherwise array. Many times in the previous classes I told you that in Python there is no any built-in array. List will be considered as array. Okay, now a is a variable, so this list is assigned with a variable. You can keep xyz. A is a variable assigned to a list. You can keep any name. No, if you want to keep y, there is no any issue. And then Vasu is a variable created. Now I want to create a column. In pandas, column is called series. So how the series will be created? PD is what? Pandas nickname. So I have changed PD pandas nickname as P. So keep it as P dot series. Series is compulsory, yeah? No change. Next A. Here there is no any way. A list name is Y. So change this as Y. And then index. Index is what? Index. You want to keep the labels. Index is equal at x label will be kept at 0 index, comma y label will be kept at 1 index, and z will be kept at what? Second index. So print Vasu because myvar I have changed, so simply you called it as Vasu. Now whenever you run this code, you will get xyz. If you want to change these labels as per your wish, if you want to change it, okay, change any values like car one label, at car, at this label if you want to keep as bikes, okay, you can keep. It is up to your wish, there is no any problem, okay, you can keep anything. Now you run this, so you will get the result as car 1, bike 7, z2. In this place of z you change any lorry,
These are what? Labels. Labels for what? Values. So see what happened. At this second value, no label created. So that's why now label is empty. If you want to keep label value here, it is as lorry. Now run this code. Your labels will be created as car, bike, lorry. 172 are values. Understood that? Like what? Very simple to create the. Very simple to create what? Very simple to create the labels. Understood that? So understood. You can keep the separators. So this is very simple class. You can simply understand that how to create the labels. So whenever if you will not, अगर आपने कोई लेबल स्पेसिफाई नहीं किया वैल्यूज़ के लिए, सी ये है वेट वन. वन इज़ व्हाट? जब भी आपने लेबल अप्लाई किया एट वन लेबल मीन्स जीरो इंडेक्स. जीरो इंडेक्स बिकॉज इधर जीरो इंडेक्स इज़ ए लेबल. बिकॉज आपने लेबल कोई नहीं दिया तो इंडेक्स ही लेबल बनेगा. सो एट जीरो लेबल के जीरो इंडेक्स के बाद जो वैल्यू होगा वो जीरो इंडेक्स इज लेबल. जीरो लेबल के पास वन वैल्यू है. अगर आपने दे दिया सेकंड इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स 0 1 2, लेबल अभी 2 बन गया. सो उसका वैल्यू आएगा आपको. ठीक है. अगर आपने लेबल्स नहीं दिया है तो आप लेबल दे सकते. क्रिएट ए लेबल. कैसा? इंडेक्स आर्ग्यूमेंट. हियर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट है. वेयर इज़ दैट इंडेक्स आर्ग्यूमेंट? दिस इज़ इंडेक्स आर्ग्यूमेंट. इस इंडेक्स आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने लेबल्स दिया है तो वो लेबल्स क्रिएट होते हैं. एनी लेबल्स को ऑलवेज डबल कोटेशन मार्क्स, हर लेबल को कामा से सेपरेट करो, हर लेबल को डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर रखो. यू कीप ऑल द लेबल्स इन डबल कोटेशन मार्क्स. एवरी लेबल टू बी separated with the colon, sorry, comma. Understood? Then call that variable. Now this pd dot series, okay, how you if you assign to a variable myvar, your name, my name, variable is, it is up to you. Understood that? I told you that what is the difference between single dimensional array, two dimensional array, multi dimensional. Single dimensional array is single list है. Single list मतलब only one list is called in Python array. Array also called as list. So single dimensional array means one list. Okay, if a list is in another list, mean array is in another array, that is called a multi-dimensional array. Understood? This is so once you have created labels, so we can access an item by referring to the. अगर आपने labels create किए हैं तो उस label को इस्तेमाल करके आप उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. रिटर्न द वैल्यू ऑफ y. अभी हमने इधर क्या दिया था? एक x एक लेबल है, y एक लेबल है, z. इस लेबल को रेफ़र करके वो वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं. अगर लेबल नहीं दिया तो इंडेक्स नंबर को वो लेबल मानते हैं. सो इफ़ यू विल नॉट क्रिएट ए लेबल, सो इंडेक्स numbers will be considered as label. So by referring of that label we can access. Now by y is a label of my var variable. So whatever the value at y label, at y label, what is the value? Y label. So whatever the value at y label, that will be printed. Okay, it is delaying. Access is very delaying. Very no issue. Next is what? Key value objects as series.
key value objects as series. So key value pair, that is part of your dictionary. In Python, at the time of my class, I told you that how to create data structures like lists, tuples, sets, dictionaries. All data structures I have brief dictionary. First list will be represent square brackets, tuple will be represented in parenthesis bracket, and set will be represented flower brackets. Dictionary also in flower brackets, but difference is that in dictionary key value pair will be there. Every value will be assigned with a key. Both will be separated with colon. So key value, that is an object, so that can be used as series. Okay, series means a column. So now here we can use key value object. So it is part of a dictionary. So whenever we are creating series, we can use this key value object. Okay, create a simple Pandas series from a dictionary. I told you that key value is part of your dictionary. We can use that key value pair to create the series. Okay, means one column. Import Pandas as PD. Calories is a variable is equal day 1 420. It is a pair. Day 1 key assigned with a value 420. Now this total is called one pair in dictionary. I told you that in Python dictionary will be represent flower braces, but set is also represented in flower brace. What is the difference between set and dictionary? Set and dictionary के difference क्या है? मैंने बताया था पांडास के अंदर पाइथन के अंदर सेट को फ्लावर ब्रेस में लिखते हैं, डिक्शनरी को भी फ्लावर ब्रेस में, बट डिफरेंस क्या है? डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं. एक की होता है वो पेड विथ ए वैल्यू. डे 1 पेड विथ 420, डे 2 पेड विथ 380. डे 2 380 के साथ पेयर किया गया, दोनों को एक कामा से सेपरेट करते हैं, बट की को हमेशा डबल कोटेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, की वैल्यू को सेपरेट करते हैं कॉलन के साथ. अंडरस्टूड दैट. नाउ इसको सीरीज बनाना हमने, सीरीज. सो नाउ एक वेरिएबल क्रिएट करो और पांडास का शॉर्ट नेम क्या? व्हाट इज़ द शॉर्ट नेम? निक नेम पी डी, अलियास नेम pd डॉट सीरीज ब्रैकेट इस कॉलर कैलोरीज को कॉल करो. सो नाउ ये की वैल्यू पेयर एक कॉलम बनेगा. सी सिंटैक्स दिस इज लाइक दिस. सी day 1 is assigned with day 1, day 2, day 3. These are labels for values 420, 380, 390. These are values. So if day 1, day 2, day 3 are what? Labels. Okay, so your dictionary which is having key paired with values, they all are converted into a series, means a column. Okay, series means, I told you that series is what it is like a column. Column means now generally data इन ये टेबल फॉर्मेट में स्टोर होते हैं. टेबल फॉर्मेट में स्टोर होना मतलब टेबल के अंदर डाटा कॉलम्स एंड रोज में क्रिएट होते हैं, स्टोर होते हैं, इसको एक टेबल बोलते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स एक डाटाबेस होते हैं. मीन्स डाटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं. ए डाटाबेस में हैव मोर देन वन टेबल्स. ओके, डाटाबेस को हम लोग कृषि, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, ओरेकल, बहुत सारे आरडीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम, उनके अंदर हम डाटा क्रिएट कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड दैट. वेरी सिंपल है, हम कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं. ये इसको लेबल्स को चेंज करो, आपने चेंज करना चाहते हैं लेबल को. डे 1 के जगह पर आपने और कुछ लिख लो. डे 1 के जगह पर लिख लो मंडे लिखो. नेक्स्ट लेबल को इधर डेज लिखो, कैलोरीज मत, ये डेज लिखो. मंडे, इस मंडे को मंडे इज़ ए की असाइंड विथ 420. ट्यूसडे इज़ असाइंड विथ 380. उसके बाद लिखो, अगर आपने यहाँ तक भी रन कर दिया तो आपको ऐसा आएगा.
error. Error is where name error. Name calories is not defined. Name calories लाइन 5 के अंदर रह रहा है. Calories not defined means क्या हुआ है कि आपने you are calling calories in line 5, but you have changed the name variable name as days. So you call this as days, not calories. Days. Okay, understood that. Now what happened? Whenever you run this code, you will get the results. Okay, this is Monday for 420, Tuesday 380, day 3 390. Day 3 I have not changed. You change, practice yourself. Huh? So this is somewhat how to create the labels by using of dictionary key value pair. So key value, by using key value object of dictionary, and we can create the labels. Very simple. Huh? Next, so the keys of the dictionary become the labels. Keys of the dictionary, but values become the values. Keys of the dictionary become the labels. To select only some of the items in the dictionary, use the index argument and specify only the items you want to include in the series. So index argument को इस्तेमाल करके हम लोग पर्टिकुलर पर्टिकुलर लेबल्स का वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं. जैसे कि कोड है इंपोर्ट पांडास एज पी डी अलियास नेम है. कैलोरीज इज़ ए वेरिएबल. दैट वेरिएबल मीन्स दिस इज़ ए dictionary is assigned with key value pairs. Values keys are day 1, day 2, day 3 are the keys, and values assigned for day 1 key 420, day 2 380, day 3 390. It is a dictionary. So the dictionary named as calories. Now if I want to get the I want to make a column. Series means column of calories with the index name. Okay, index day 1, day 2. Only specific day 1, day 2. Only टू कॉलम्स मुझे क्रिएट करना चाहता हूँ. उसके अंदर केवल डे 1, डे 2 का वैल्यूज़ ही होंगे. तो उसके लिए देखिए कैसे होते हैं. रिज़ल्ट ये होता है. डे 1, डे 2 का लिया हमने. ओनली डे 1, डे 2. डे 1 having it is day 1 is a label which is having. I told you that dictionary के अंदर all the keys converted into labels. Day 1 label having 420, day 2 label having 380, but three labels. day 3 नहीं लिया. तो पर्टिकुलर हम लोग क्या ले सकते हैं, इंडेक्स आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल करके. इंडेक्स आर्ग्यूमेंट कंपलसरी है. डे 1, डे 2. अगर आपने डे 1 का ही लिया है तो आपको डे 1 का ही लिया तो डे 1 का ही आएगा. केवल डे 1 का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर ओनली वन लेबल डे 1 420. ओके, डे 1 का आप चेंज करो. डे 1 के जगह पर कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है. वासु रख दिया, वासु लेबल बन जाएगा. हियर वासु क्या बनेगा, लेबल बनेगा. एरर आया एन नन, क्योंकि वासु को आप इंडेक्स डे वन हाई ने डे 1 के जगह वासु बना, तो आपने इधर वासु डे 1 के जगह पर यू नीड टू कॉल इट एज वासु. ओके, नाउ वासु लेबल के अंदर 420 है, वो वैल्यू इधर रिप्रेजेंट होगा. डे 2 का मैंने चेंज नहीं किया. अंडरस्टूड दैट. मतलब इट मीन्स दैट यू कैन call that values, specific values, by using of index argument. Okay, index argument used here, and that index argument you need to mention the keys. So whenever you mention specific keys, the values at specific keys they will be displayed. That is the way how to access, how to get the values at specific values. Okay, so specific so data sets in. Okay, next data frames.
इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ, क्रिएट ए सीरीज यूजिंग ओनली डाटा फ्रॉम डे वन एंड डे टू. सो डे वन एंड डे टू कीज इस्तेमाल करके हम लोग एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे. सो सीरीज़ मतलब कॉलम है. डे वन डे टू कीज़ उस डिक्शनरी के अंदर ओनली आई यूज़ डे वन एंड डे टू कीज़, एंड at that keys whatever the values they will be printed as a columns. Same thing by using index argument. So that is called to select only some of the items in the dictionary. If a dictionary having so many, if a dictionary having so many values, key value pairs, सो उस डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स. सो बाय इंडेक्स आर्गुमेंट के साथ आई कैन स्पेसिफाई ओनली सम आइटम्स. इफ योर डिक्शनरी हैविंग 4 or 5 key value pairs, if I want to get only 2 value pairs as series, okay, since this is the thing I have done. Next, data frames. Already in the previous class I told you the data frames are what? They are the multi-dimensional data sets. मल्टी डायमेंशनल डाटा सेट्स मीन्स मैंने बताया कि मल्टी डायमेंशनल मीन्स अरे इन अनदर अरे. सिंगल अरे मीन्स ओनली वन लिस्ट, अदरवाइज वन अरे हैविंग एनी integer values, otherwise float array means float, it is having float values. Char array means it is having only char characters. So data frames क्या होता है? They are the data sets in pandas. Usually they are multi-dimensional tables, arrays, okay, called data frames. Series is what? It is like a column. So data frame is the whole data table है, okay. Data frame कैसा? मैंने two series means two series are what? Two columns. वो टू कॉलम्स के साथ लेके हमने एक डाटा फ्रेम बनाना. डाटा फ्रेम मतलब एक मल्टी डायमेंशनल अरे बनाना. सी import pandas as pd. Data is what is variable here. This is a dictionary having what? Two lists. Every list, one list is name is calories, having the integer values. Second, duration, that is one more list having list. Why? Because values are stored in square brackets. Whenever in Python, if values are represented in square bracket, it is a list. So name is what? Duration. Two lists are there. From these two lists we need to create a data frame, okay, from two series. Series what? Series is a column. So now let us see what will be happen here. So what happened? Try to understand here. Data is a variable. Now that variable, it is having two lists under a what? Flower braces are there. Flower braces means these two are what? Two. They are what? See. Calories is a variable. So under this calories, all the values are listed as columns. Okay, we need to create what? Series. Okay, this calories is a series of having 420, 380, 390. We have not mentioned any label. हमने कोई लेबल नहीं मेंशन किया है, इसलिए उनका इंडेक्स नंबर ही लेबल 0, 1, 2. So duration is this second list converted into a series. Okay, second list converted into a series. Series means a column. This duration is a column having 50, 40, 45. Calories is a column having 420, 380, 390 are values. They are represented at the indexes. We have not mentioned any labels. Okay. So this is the very simple. You can do. If you have not understood anything, you make a call to me. My number is 9110398650, 9110398650.
So to create a data frame from two series, मैंने बताया कि data frame is a two dimensional array. Two dimensional array. Two dimensional array means array in another array. ठीक है, array in array. Okay. So here simple question exercise, insert the correct pandas method to create a series. सीरीज बनाने के लिए pd dot mylist. mylist is a variable. हमने सीरीज बनाने के लिए क्या चाहिए इधर, सीरीज. yes, series. Now you run, submit the answer. Where is that? So leave it that, okay.